Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. So, this is the third session for our internship. ये हमारा तीसरा session है. And ये recorded होगा तमाम ज़बानों में. This is in Urdu, but it will be recorded in English and in other languages as well. And तमाम languages में इसको broadcast वो English अभी उर्दू में कर रहे हैं, but it will be available on our portal. There are a couple of updates I would like to share with you. By the end of the session, I will share some more things. However, right now, since we are going to talk about the PCI-DSS project, the internship, we're going to talk about all of those things. So, jitne bhi log hain, whoever is studying, they need to study in the unified course. Iske shuru ke 5-6 sessions live honge, where you can join in, but then everything will be in the portal. So in the next after 7 sessions, everything will be in the portal. So ye phir YouTube pe, Facebook pe, LinkedIn pe, you won't be able to see the broadcasts, right? If you are an old student of CAT, VAT, Career Advancement Track, Women Advancement Track, or CORDS or whatever, you can still join this internship. You have to transfer yourself. For the first 3 months, it is free. You can join in. This is for legacy students. जो नए students आते हैं, जो diploma programs में आ रहे हैं, because now everything is through the diploma program, उसमें उनको basically उनके पास जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि they can join in basically the program from day one. The other thing is that whatever program you're studying, जो मेन चीज है वो हम यहीं पर ही डिस्कस करते हैं, ठीक है? जस्ट गिव मी 1 minute. So to answer your question, there's a lot of things जो आप लोगों को समझनी है. We will always give you the internship in the level 3. The level 3 is the base, ठीक है ना? Next, in our next class, I will show you all the things that you need to see as well to give you an idea of how things really roll out. So now what we're going to do is, अगर आप diploma in cloud cybersecurity कर रहे हैं, या DevOps कर रहे हैं, या SysOps कर रहे हैं, या DevOps SysOps मिला के कर रहे हैं, या DevOps SysOps AI मिला के कर रहे हैं, whatever combination you're doing, offensive security कर रहे हैं, all of these people need to attend the base session. This is the base session where I hand out the work as a CIO, as a CEO of the company. मैं जहाँ काम देता हूँ और ये सारा काम होता है. This is real project. This is a real network. This is not a sandbox environment. ये कोई sandbox नहीं है. This is all real. यहाँ पर जो हमारा काम हो रहा है, this is all real projects जिसमें आप खुद काम कर रहे हैं and you're trying to figure out ये चीजें बनती किस तरह हैं, कैसे काम होता है, क्या होता है, so on and so forth. And you're trying to figure out. So इसमें जो हमारा जितना भी काम है, ये सब real उसका काम है. 1 मिनट सब्र कीजिएगा, please. So in today's session, हम ये हमारा day 3 है of the internship program. This internship program is very important because this sets the foundation stone. आप कहीं पर भी इंटरव्यू के लिए जाएंगे, आप कहीं पर भी काम करने के लिए बैठेंगे, wherever you apply, this is the only platform in the world. This is the only platform in the world जहां आपको ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसे करना है, प्रोजेक्ट्स कैसे करने हैं, उन तमाम चीजों को बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है. We are not only teaching you academic stuff. Academics on our area, हमारे पास, on our side, we only emphasize on 20%. हम 20% academic पढ़ाते हैं, 80% is all hands-on. ठीक है? On the contrary, organization, जो universities हैं, they only teach you 100% academics. So that is why there is a disconnect. This is the job market. This is you coming out of the university, and the university leaves you here. You can't even go into the industry to work. This is the industry. So whoever has joined this platform, उसका एक मकसद है. जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, and they can all agree with me that they all joined this platform for one singular reason, and that is to find and secure a job, either in Pakistan, India, Bangladesh, Middle East, North America, South America, in US, Canada, wherever you are, in UK.
just today I got a good news that one of our student in UK, जिसने अभी अपनी डिग्री खत्म की थी, and he is doing with us, he appeared for an interview from UK on a student visa, और उसने इंटरव्यू दिया जर्मनी में, and he passed his first interview. So now he's going for the second round. अब वो second round के लिए जा रहा है, right? Second round means that second round में they will be just discussing his package and all of those things. So this is the person from a South Asian country living in UK में रह रहा है और student visa पे था और वो वहाँ पे interviews दे रहा है जर्मनी में. Germany and all of these countries, Finland, there are tremendous opportunities. UK में भी opportunities बहुत हैं. USA, Canada, wherever you go, in the G20 overall, there's tons of opportunities. India, अगर आप इंडिया में, there's a ton of opportunities. So this is the global platform. ये हमारा global platform है जहाँ पर हम पढ़ाते हैं, बताते हैं, so on and so forth. So this was a high level overview. In the first session, we discussed a couple of things. जो हमने first session किया था, we discussed, हमने जो discussion किया था, it was very simple, but we went through like the project. The project was, हमने जो project discuss किया था, it was कि हमारा जो project है, जो हम करने जा रहे हैं, level 1 payment service provider on AWS cloud. ठीक है? ये हम बनाने के लिए जा रहे हैं. Project की initialization है, where Yusuf, our director of consulting, is leading the initiative with his BAs, business analyst. So Yusuf is also acting as an architect. Yusuf जो है, he's also acting as an architect as well. जहाँ पर हमने तमाम चीजों को establish करना है, and we will go through all of these things. This is a 6 months project. The duration is 6 months, and this is a very, very comprehensive project. As you can see, project planning में हमने application, databases, networking, everything, and all of these things are in the cloud, which is AWS cloud provider, AWS cloud, right? इसमें बहुत सारी services हैं, open source हैं, so on and so forth. ये सब चीजें आपको बहुत मुश्किल लग रही होंगी. यार, I'm just doing deployment cloud cybersecurity, level 3, RQF level 3 qualification. I have no idea what is EC2, S3, RDS, VPC. ये क्या चीज है, ये क्या चीज है? I don't know. Don't worry. Your job is to just sit in the internship program, because जब आप बैठते हैं, in your resume, we will put there that you are working on this project, because you are working on this project. This is as real as it can get. इससे ज़्यादा real हो नहीं सकता. It can't get real than this. And when you go for the interview, जितना यहाँ काम सीखोगे 6 months में, सारा जाके बता सकते हो. भाई, I did this, I did this, I did this, and they ask you कैसे किया, क्या किया. You will explain to them all the things. So that's the goal. ठीक है? And you'll be doing all the hands-on activities and all those things as well. So this is a lot of work. इसमें बहुत काम है. So if you're doing deployment cloud cybersecurity, you will only be able to attend this main class, but only do deployment cloud cybersecurity tasks that you will see. जैसे जैसे project plan बनेगा, you'll be able to see. If you're doing DevOps, then you will be able to work in deployment cloud cybersecurity and DevOps, both, depending if you acquired the diploma. If you're studying SysOps, diploma and SysOps, then level 3 and level 4, दोनों की classes लेंगे. If you're doing level 5, DevOps and SysOps combined, तो फिर आप level 3 जो ये class है, and the level 4 and level 5, सबकी classes का काम हम देखेंगे. So there's a lot of work. ठीक है? But this is all work that is related to basically जो आपका सारा जो काम है, that is all related to of identifying people, then processes, and then technology. I'm going to show you all the things. Organization में काम कैसा होता है. दुनिया में wherever you go, दुनिया में कहीं पर भी चले जाओ, except Antarctica, because no work is being done in Antarctica. Antarctica एक continent है, उसमें कुछ नहीं होता. और Arctic ऊपर जो है, North and South Pole. Antarctica is a South Pole, Arctic is a North Pole. दुनिया के 2 poles हैं. इन poles में कोई इंसान नहीं रहता. ऊपर North Pole में थोड़े बहुत शायद लोग रहते हैं. The native Indians in Canada, right? A small population, थोड़े से लोग रहते हैं, but काम कुछ नहीं होता. Apart from that, you go to any other continent, North America, South America, Asia, South Asia, I mean, Asia is all one, Europe, Africa, in the Middle East, in the middle, जो आता है, wherever you go, ठीक है? Oceania, which is like Australia and New Zealand, कहीं पर चले जाओ.
आप सबको यही काम मिलेगा. This is how work is done actually. तो आप यही चीज सीख रहे हो. And there's a lot of things. So even आप course पढ़ रहे हो and you can't understand that, you still sit through all of this training because ये आपकी interview preparation है. ये आपका hands-on काम सीखने का है. If you miss this, you will miss everything. So not only watch the videos, unified course में आपको जो भी course है line से रखे हुए. Just keep on following the courses. Keep on following the courses. It's simple. However, अगर आप चाहते हैं कि while you're doing the courses, यहाँ बैठो and just act as a fly on the wall. जैसे मेरे पीछे there's a wall behind me. जैसे मक्खी होती है ना दीवार पे बैठ जाती है, just like a fly on the wall. कुछ नहीं करती. It's just observing what's happening in the room. Just observe. Because जब आप किसी organization में जाते हैं, you don't do anything. For the first 3 months, they make you go through different departments. You meet people, you greet people. This is all what you're doing right now here. But in the next, after 3 months, they will give you work, and you have to do all of those tasks. This is all flexible. आप ये सारा flexible है. आप कहीं से भी बैठ के कर सकते हैं. If you miss the class, they will be recording there. You can take the recording as well. In English, the recording will be available in few weeks' time. So right now there's a lag. Urdu mein available hai. It is available in Urdu Hindi, but it will be available in English as well. Our students are getting successful because of this program. This program is the program that teaches them, enables them to be successful. So going through this is very, very important. In the first class, we went through all the key things, right? Project planning, implementation, testing. We carved out a high-level plan. Training, deployment, maintenance, project closure, right? Now, we have to go through other things. For example, what are the people? We have to identify the people, the processes, and the technology. 3 things: people, processes, and technologies. But before we can even plan these things out, identify people, who is who, etc., you need to learn 2 things. And second class में आपको बताया था ERP के बारे में. Enterprise resource planning. Enterprise resource planning जो है, there are different enterprise resource planning softwares. If I search online और मैं अगर उसको देखूं, ठीक है, you will see ERP top players, ERP Magic Quadrant 2023. So अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं, दुनिया में ERP में कौन-कौन से लोग बैठे हुए हैं जो ERP में चला रहे हैं, the Magic Quadrant, you will be able to see some names. Let me show you some of the names. Let me open my screen and show you some of the things. Give me 1 minute, please. So दुनिया में ये solution जो है, ये बहुत important है. ये solution क्या है मैं आपको बताता हूँ. I will explain it to you, but this is very important for you to understand. Wherever you go, you will find some solutions, and this is the ERP, Enterprise Resource Planning. इसके अंदर सारी planning होती है, लोगों को identify किया जाता है, resources को identify किया जाता है. आप जो भी काम करने जा रहे हैं ना, whatever you are about to do, you have to write it down somewhere. So यहाँ पर you can see there are different players, niche players, friends, talent, Huawei, Celigo. These are the ones के जो अभी मार्केट में नए-नए आ रहे हैं. Visionaries, Jitterbit, SnapLogic, Software AG, IBM, ये visionaries में इनकी solution है. And then leaders में SAP is number 1. And then Oracle, WorkAuto, Microsoft, Salesforce, Boomi, Tipco Software. And then challengers में Trade.io. So you will see कि दुनिया में बहुत सारे players हैं जो कर रहे हैं. But there's a whole world of open source solutions. So organization में, it's not important that you need to deploy a very expensive ERP, right? We are using ERP Next. हमारे पास जो है, we are using ERP Next. It's a good solution, right? जो हमारी requirement है, वो सारी पूरी करता है. It does everything. And since हमारा जो काम है, what we do is, हमारे पास सारी की सारी चीजें open source हैं. We are very heavy on open source. So we make sure that it works. ERP Next is one of the best application right now available in the industry, the most agile ERP on the planet. This is ERP Next. इसके अंदर, this is completely open source. You know,
एक ही जगह आप सब चीजें मैनेज कर सकते हैं। ग्रेट सोल्यूशन। इसमें डैशबोर्ड्स हैं, कैनबैन, पॉइंट ऑफ सेल, यूजर मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट्स, ऑर्डर्स, whatever you do in your organization, you can use it. इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम करेंगे। वी विल डू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हमारे प्रोजेक्ट में कितना खर्चा हो रहा है, हाउ मच मनी आर वी स्पेंडिंग, राइट? विल बी गोइंग थ्रू दैट। ऑर्डर मैनेजमेंट, अगर हमारी आगे जाकर लेटर ऑन हम डिफरेंट काम करेंगे जिसमें ऑर्डर मैनेजमेंट का भी काम होगा, बिकॉज वी आर टचिंग डिफरेंट इंडस्ट्रीज इन आवर इंटर्नशिप। ठीक है, इंटर्नशिप इज वेरी डायनेमिक। इफ यू आर लर्निंग हियर राइट नाउ इन दिस मंथ, अगर आप जनवरी में भी आते हैं, जून में यू स्टार्ट स्टडीइंग, 6 months time, July, in December, this whole project will finish. So you can write down in your resume all the things you have done as per your basically track diploma you're studying. So if you're doing AI ops, then you will learn diploma in cloud cybersecurity tasks, diploma in DevOps, diploma in SysOps, diploma in AI, all the 4 tasks. And there's a lot of tasks. So the more you mention in your resume, the more you know stuff, जितना आपको ज्यादा पता है, जितना आपको ज्यादा चीजें आती हैं, इतना आपके लिए ज्यादा अच्छा है जॉब के लिए, राइट? बिकॉज दे सी यू एज अ इंडिस्पेंसिबल। वो आपको देखते हैं कि भाई वी कैन नॉट, यू नो, इररिप्लेसेबल। वो कहते हैं इस बंदे को मैं रिप्लेस नहीं कर सकता, आई कांट रिप्लेस दिस पर्सन, राइट? दैट्स व्हाट वी आर टीचिंग। सो यहाँ पर ब्लॉकचेन भी है, यहाँ पर ऑफेंसिव सिक्योरिटी भी, यहाँ बहुत सारी चीजें, देयर इज अ टन ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन। ओके, ईआरपी के अंदर हम बहुत सारी चीजें कवर करेंगे, बट अगर आप पूरे साल पढ़ते हैं, आप जब तक आपकी मेंबरशिप एक्टिव है, लेगेसी स्टूडेंट्स दे कैन ओनली स्टडी 3 months, आफ्टर दैट उनको अपने आप को ट्रांसफर करवाना पड़ेगा सम डिप्लोमा प्रोग्राम में, व्हाटएवर दे वांट टू डू। और जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, एज पर द डिप्लोमा दे कैन स्टडी इन द इंटर्नशिप एज लॉन्ग एज उनकी मेंबरशिप एक्टिव है। जब तक आपकी एक्टिव है आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, और जितने ज्यादा ट्रैक्स पढ़े, इतनी ज्यादा पार्टिसिपेशन आप अलग अलग टीम्स में कर सकते हैं और सारा काम सीख सकते हैं, और आपको सारा काम दिया जाएगा पोर्टल के ऊपर। सो HRM पेरोल आप यहाँ देख सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, CRM, प्रोजेक्ट्स, हेल्प डेस्क, एसेट मैनेजमेंट, वेबसाइट, एवरीथिंग इज हियर, राइट? और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज इसको इस्तेमाल करी, एंड वी आर यूजिंग वन ऑफ देम एज वेल। सो वी यूजिंग दिस आवरसेल्फ। सो ERP इज अ ग्रेट सोल्यूशन। नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ERP? मतलब ERP का ना बेनिफिट क्या है? आई मीन व्हाई ऑर्गेनाइजेशंस आर बेसिकली doing or going through all of these things. So ERP जो है, जिसके benefits हैं, जो उसकी importance है, वो बहुत ज्यादा है, because as I said, process integration, आपको process design करना है ना, the process के different functions हैं, different departments हैं। यहाँ पर security department अलग है, DevOps का department अलग है, SysOps का department अलग है, AI Ops का department अलग है, networking अलग है, administration अलग है। You need to identify all the things. फाइनेंस अलग है, ह्यूमन रिसोर्सेज अलग है, सप्लाई चेन, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, हर उसमें आपको पता होना चाहिए। पार्ट ऑफ दिस ट्रेनिंग आपको यहाँ पर HR की ट्रेनिंग भी दी जाती है, सो दैट आपको पता हो कि HR में कौन कौन से लोग कहाँ किधर कैसे बैठे हैं, राइट? दिस इसको करना सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीजें। नाउ ERP के जो नेक्स्ट वो है सेंट्रलाइज डेटा मैनेजमेंट। आप एक जगह से सब जगह देख सकते हैं, सेंट्रलाइज मैनेज कर सकते हैं कि कौन सा डेटा कहाँ पर क्या है। इससे आपकी एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन में। आप कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यू नो एग्जैक्टली कौन सा रिसोर्स मेरा किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? इनहैंस कस्टमर रिलेशनशिप, अगर आप, इसका एक और बड़ा फायदा है कि इनहैंस कस्टमर रिलेशनशिप, आप जिस कस्टमर को, जैसे वी हैव टू बिल्ड अप लेवल 1 पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क, सो उस कस्टमर का टारगेट होता है, दे गिव यू अ टास्क कि भाई विद इन 6 months, विद इन 3 months, विद इन 2 months, विद इन 1 month, दिस टास्क नीड्स टू बी कंप्लीटेड। सो आपको उसको ट्रैक करना है, ट्रेस करना है, और अगर आप उस टाइमलाइंस को मीट करते हैं, कस्टमर्स आर हैप्पी, राइट? सो ERP बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई यू विल बी गिवन एक्सेस टू द ERP। आप ERP में लॉग इन करेंगे, इन द नेक्स्ट 2 weeks इट विल बी डन। नेक्स्ट 2 weeks में आपके पास एक्सेस आ जाएगा, एंड फॉर दोज ऑफ यू हु लेटर कम ऑन, दे विल हैव एक्सेस फ्रॉम द गेट गो। सो वही जो सेम आईडी है जिससे आप पोर्टल में लॉग इन करते हैं, वेबसाइट पे लॉग इन करते हैं, यू कैन यूज द सेम यूजर नेम एंड पासवर्ड टू लॉग इन देयर एज वेल। होपफुली दैट विल बी डन। वी आर सेटिंग अप द सिंगल साइन ऑन एंड एवरीथिंग। सिंगल साइन ऑन के बारे में भी आप पढ़ेंगे। डेटा एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग, इसमें आप एनालाइज कर सकते हैं कि मेरे कितने रिसोर्सेज कहाँ पर काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, मुझे पूरा प्रोजेक्ट डिलीवर करना है, ठीक है ना?
कैसे करना है, क्या करना है, किसको कांटेक्ट करना है, कौन क्या रिस्पॉन्सिबल है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. एंड देन सप्लाई चेन मैनेजमेंट. ये सर्विसेज हम कहाँ से ले रहे हैं? आर दे कमिंग फ्रॉम AWS, Azure? फिजिकल कंपोनेंट्स हैं, उसकी सप्लाई चेन कहाँ से आ रही है? सर्विसेज हैं, उसकी कहाँ से आ रही है? सर्विस मैनेजमेंट. बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं. रेगुलेटरी कंप्लायंस. PCI-DSS क्या है? इट्स अ रेगुलेटरी कंप्लायंस. यू नीड टू कंप्लाई विद PCI-DSS, क्योंकि अदरवाइज आप पेमेंट कार्ड डेटा एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते. सो उसके लिए आपको एक जगह सब चीजें नजर आती हैं, आपकी पीपल, documentation, processes, and technology. You can see everything from one pane of glass. आपको एक ग्लास से सब चीजें नजर आती हैं, राइट? इसके बाद स्केलेबिलिटी इन ग्रोथ. इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ERP सिस्टम जो डिजाइन होते हैं वो कॉम्प्लेक्स टास्क को हैंडल करने के लिए होते हैं. दुनिया में जितनी कंसल्टिंग कंपनीज हैं, एवरी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन यूजेस ERP एंड CRM. इस ERP के अंदर CRM ऑलरेडी बिल्ट इन है, राइट? समटाइम्स दोनों अलग अलग होते हैं, बट ये मॉड्यूल होता है, CRM का मॉड्यूल होता है, पेरोल का मॉड्यूल होता है, एंड ऑल ऑफ दीज मॉड्यूल्स आर पार्ट ऑफ दैट ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग. सो दुनिया में जो लीडर है इस वक्त वो SAP है, ठीक है ना? SAP इज अ जर्मन बेस्ड कंपनी, और उनका जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं दे ऑल यूज SAP. हाउएवर द प्रोसेस इज द सेम, द मेथोडोलॉजीज आर द सेम, द लुक एंड फील में भी डिफरेंट, देखने में अलग अलग नजर आता है, राइट? But it's the same thing. ये जो मैंने शर्ट पहनी है, this shirt is from Joe Fresh. You can wear this, you can buy the which is like $15-20, ठीक है ना? अगर आपने यही शर्ट लेनी है Banana Republic से, it will be $120-150. If you go to other, but it's just still a shirt. Yes, I mean it's a linen shirt, ये अच्छी लग रही है जो भी है, ठीक है ना? But it's the same shirt. Quality may differ. अगर आप बिल्कुल नीचे चले आएंगे, you go to Old Navy, तो वहां आपको $5-10 में मिल जाएगी सेल में. सो इट ऑल डिपेंड्स, बट इट्स स्टिल अ शर्ट. सो ERP इज एन ERP. द एक्सपेंसिव यू बाय, द मोर बेल्स एंड व्हिstles इट कम्स अप विद, राइट? उसके ज्यादा फीचर्स होते हैं, सो ऑन एंड सो फॉर्थ. सो दैट्स ERP. हम जितना काम करेंगे, हम उसको जो करेंगे वो बेसिकली TOGAF के जरिए करेंगे. सो व्हाट इज TOGAF? नाउ दिस इज वेयर थिंग्स गेट इंटरेस्टिंग. ओके, TOGAF जो है वो एक पूरा सिस्टम है जो आपको डिफाइन करता है बेसिकली के ऑर्गेनाइजेशन में आपने जो पूरा आर्किटेक्चर बनाना है वो कैसे बनाना है. इट्स अ वेरी वेरी पॉपुलर फ्रेमवर्क TOGAF. इसके अंदर आप कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच डिजाइन कर सकते हैं, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड गवर्निंग एंड एंटरप्राइज IT आर्किटेक्चर. बिकॉज ये सारा क्या है? IT आर्किटेक्चर है, ठीक है? इन तमाम चीजों को आपको मैनेज करना है ना, तो इसमें आपको एक स्टैंडर्डाइजेशन एंड स्ट्रक्चर चाहिए. ऐसा ना हो कि क्लाउड की टीम अलग काम कर रही है, SysOps की टीम अलग काम कर रही है, DevOps की टीम अलग काम कर रही है, AI की टीम अलग काम कर रही है. दे आर ऑल वर्किंग इन साइलोस. नो, इसमें नुकसान है. दे ऑल नीड टू टॉक टू ईच अदर. सबने एक दूसरे से बात करनी है एंड बी ऑन द सेम वेवलेंथ. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, इसकी वजह से आपको बिजनेस स्ट्रेटेजी, मीटिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स में आसानी होती है. बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है? टू इंश्योर दैट वी डिजाइन सॉल्यूशंस व्हिच मीट customers or our corporate business objectives. That's why we are doing business. There is nothing else. Our objective is to ensure कि हम आपको इतना काम सिखाएं that we teach you enough कि आप मार्केट में जाएं and you secure the job. That's what we're doing. So exactly हर ऑर्गेनाइजेशन का एक जो है ना ऑब्जेक्टिव होता है. It has a holistic approach. It uses a very holistic approach. TOGAF एक बहुत holistic approach use करता है. And I'm going to show you TOGAF. What is TOGAF? You can download some of the things. आप इसके ऊपर जाकर कुछ चीजें डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से है, ठीक है ना? I will show you some of the things. मैं आपको दिखा देता हूँ. So जो TOGAF है, ये दुनिया में as I said बहुत सारे आपको प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे, बहुत सारे आर्किटेक्चर के वो मिलेंगे. This is TOGAF, the open group. इनका पूरा एक वो है, recognize your organization, ठीक है ना? एक पूरा एक तरीकेकार है. अगेन दुनिया में अगर आपका आर्किटेक्चर आपको नहीं पता कि आपका आर्किटेक्चर क्या है, आपका विजन क्या है, आपका बिजनेस आर्किटेक्चर क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम आर्किटेक्चर क्या है, टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर क्या है, ऑपरेशन एंड सॉल्यूशंस, अपॉर्चुनिटी सॉल्यूशंस क्या है आपके पास, माइग्रेशन प्लान क्या है, इम्प्लीमेंटेशन गवर्नेंस क्या है, आर्किटेक्चर चेंज मैनेजमेंट क्या है, यू कांट ऑपरेट. आप नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज नॉट अ मिल्क शॉप और एन आइसक्रीम शॉप. दिस इज अ वेरी डिफाइंड काम कैसे होता है. एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो है ना, इससे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को
अपने बिजनेस के पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं, so on and so forth. We will give you all the things. हम आपको इसमें देंगे, इसमें बहुत सारी चीजें आपको देंगे, आपको गाइड्स वगैरह सब मिल जाएंगी. This course is not about teaching you how to become enterprise architect. No, that is a separate diploma. ठीक है, which I am recording. यहाँ मैं आपको documentation दिखाऊंगा, and we are using the same templates to fill out the documentation. मैं TOGAF deep dive is not part of this course. मैं इस कोर्स के अंदर TOGAF को deep dive नहीं जाऊंगा. This is outside the scope of this whole course or his whole internship, because TOGAF is a completely different world. उसके लिए आपको RQF level 7 में आना पड़ेगा. This is for executives, ठीक है ना, for directors, for VPs, कि organization को manage कैसे करना. However, you will know कि organization में customer requirements, ठीक है ना, system requirements, solutions, suppliers, tool vendors, integrators, consultants, ठीक है, ये सब कैसे मिलके काम करते हैं. So we will talk about all the things at a high level. लेकिन हम सारा काम जल्दी करेंगे. We have to finish the work. हमें जल्दी अपना काम finish करना है, so on and so forth. So इसमें आपको तमाम चीजें दे दी जाएंगी. We will give you access to all of those things. That will give you an idea कि TOGAF असल में क्या है, right? So I'm going to share some stuff with you right now, right? और मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करता हूँ. So TOGAF को अगर देखा जाए, and you will get access to these documentation. अगर आपने खुद बैठ के पढ़ना है, you can read this. But I wouldn't advise you right now, because आपका जो अभी मकसद है वो जॉब को पकड़ना है, ठीक है ना. अभी extra reading, if you have the time and the energy, yes, you can do it. So यहाँ जो हमारा पूरा आर्किटेक्चर है, जो पूरा हम लेवल 1 पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर का आर्किटेक्चर बना रहे हैं क्लाइंट का, उसमें आर्किटेक्चर प्रिंसिपल्स, विजन एंड रिक्वायरमेंट्स ये हम डॉक्यूमेंट करेंगे. प्रिलिमिनरी, आर्किटेक्चर रिक्वायरमेंट्स एंड आर्किटेक्चर विजन, ये तीनों सबसे पहले जो हमारे डायरेक्टर ऑफ कंसल्टिंग है, ही विल डिसाइड दीज थिंग्स. इसके बाद आता है आर्किटेक्चर की डेफिनेशन क्या है. आर्किटेक्चर में, आपके ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर में 3 चीजें आती हैं. वो आती हैं बिजनेस आर्किटेक्चर, जिसमें स्ट्रेटजी और ऑपरेशनल होता है. इंफॉर्मेशन सिस्टम आर्किटेक्चर, जिसमें डेटा एंड एप्लीकेशंस होती हैं. एंड टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर. सो इफ यू लुक एट इट, पीपल, प्रोसेसेस एंड टेक्नोलॉजी, इट्स ऑल द सेम थिंग. ठीक है, उसको तोड़ दिया है, ब्रेक कर दिया है. और फिर आर्किटेक्चर की रियलाइजेशन कि हमने किया, कैसे किया, अच्छा किया, डिड वी डिड इट राइट, रॉन्ग, व्हाट वाज द मिस्टेक्स, और वो गवर्न करते हैं कि नहीं करते. सो ये सारी चीजें यहाँ डॉक्यूमेंट की जाती हैं. आई विल गिव यू एक्सेस टू दीज डॉक्यूमेंट्स. आपको इस डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस मिल जाएगा. इसमें बहुत सारी चीजें डिफाइन की हुई हैं. अगेन, दिस इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ दिस कोर्स, ऑफ दिस इंटर्नशिप. इसमें मैं आगे जाकर इन अ मास्टर्स लेवल प्रोग्राम मैं इसको वहां पर डिस्कस करूंगा, नॉट हियर. This is outside the scope of this internship, this project. TOGAF is a completely different beast. हम इसको यूज करते हुए अपनी चीजों को डॉक्यूमेंट करेंगे, that you can see, and the tool that we're using is wiki.js, जिसको हम यूज करें. But here we will just explain to you all the things. That's it. This is the whole scope. But if you want to read the documents, you can read the documents, without any problems, right? वो आप कर सकते हैं. इसके total 5 parts हैं. ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट है, दैट इज द स्टैंडर्ड. द फर्स्ट पार्ट इज द स्टैंडर्ड. दिस इज द स्टैंडर्ड, राइट. द सेकंड पार्ट जो है इसका, वो बेसिकली आपका जो है ना, ग्लॉसरी और डेफिनेशन और सब चीज आती हैं. आर्किटेक्चर, ADM, आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट मेथड, जिसको हम कहते हैं. और अगर आप यहाँ देखेंगे, यू विल सी कि ऑर्गेनाइजेशन में आपका कैपेबिलिटी विजन आर्किटेक्चर क्या है, सेगमेंट लेवल इनिशिएटिव्स क्या है, सेगमेंट विजन एंड आर्किटेक्चर डेफिनेशन क्या है, टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन, डेटा, बिजनेस, ये लेयर्स हैं. इसको हम कैसे डोमेन्स को करेंगे, दिस इज अ लॉट ऑफ थिंग्स. इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं. अगेन, दिस इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ दिस होल इंटर्नशिप. सो अगर मैं इसको बैठ जाऊं डॉक्यूमेंट करना, इट विल टेक अस 9 months, बट जस्ट फॉर डॉक्यूमेंटेशन वी आर नॉट डूइंग दैट, राइट. वी आर जस्ट गोइंग टू डॉक्यूमेंट इट फास्टर, ठीक है ना, विद द इंटेंट दैट वी विल वॉक यू थ्रू कि यार ये चीज है, ये चीज है, दिस इज व्हाट वी डूइंग, दिस इज व्हाट वी डूइंग, एंड दैट्स इट. ठीक है. यहाँ पर कॉर्पोरेट के फंक्शंस होते हैं. यू कैन सी देयर आर डिफरेंट फंक्शंस इन कॉर्पोरेशंस, राइट. डिफरेंट फंक्शंस हैं. ये जो फंक्शंस हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है. दिस इज मी, द CXO, द C लेवल. उसके नीचे हमारे डिफरेंट टीम्स हैं. देयर इज एंटरप्राइज सिक्योरिटी, देयर इज प्रोग्राम मैनेजमेंट ऑफिस, देयर इज अ QA स्टैंडर्ड्स ग्रुप, देयर इज अ प्रोक्योरमेंट, एंड देन देयर इज HR. और इन तमाम के लिए
अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, एंड यूजर ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन है, सिस्टम ऑपरेशंस है, एंड देन एक्सटर्नल सप्लायर्स एंड रेगुलेटरी बॉडीज। ये एक ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की है एट अ हाई लेवल। ऑर्गेनाइजेशंस इस तरह से काम करती हैं। सो इस पूरे उसके ऊपर आप ये डायग्राम देखेंगे, वी विल डॉक्यूमेंट दैट। यहाँ मेरा नाम देखेंगे, यहाँ पर आप यूसुफ का नाम देखेंगे, एक्सक्यूज मी, इन सब के नाम हमारे जो जो टीम में लोग काम कर रहे हैं, यू विल सी डिफरेंट नेम्स। यहाँ पर इसके अंदर फिर उसका लैंडस्केप और सब चीजें, उसकी एक अलग डॉक्यूमेंटेशन है जिसमें हमने टाइम कितना लगा रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, ये सब चीजें भी आपको मिलेंगी। अगेन हम इसको तैयार करके आपको दे देंगे, वी विल प्रिपेयर इट फॉर यू एंड वी विल गिव इट टू यू। देखो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है। देयर इज अ CIO CTO विच इज मी, आई एम द गाय। उसके नीचे आर्किटेक्चरल बोर्ड है which is Yusuf, and then there is a develop team, there's an implement team, there's a deploy team, and there is architecture repository. So as per your diploma track or advancement track, जो आप पढ़ रहे हैं, RQF level 3, 4, 5, 6, जो भी whatever 7, whatever we're doing, we are about to release 7 as well. तो इन तमाम के लिए आपको अलग अलग काम करना पड़ेगा कि what to do here, what to do here, what to do here, और यहाँ कैसे होगा, यहाँ कैसे होगा, so on and so forth. So this is at a high level एक TOGAF का आर्किटेक्चर। ओके, जो हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे, वी विल स्टार्ट कवरिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स स्लोली एंड ग्रेजुअली, एंड यू विल गेट टू नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, जिसमें आपको चीजें समझ आ जाएंगी। ओके, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है TOGAF की? आर्किटेक्चर की आपको ना एक पूरा आर्किटेक्चर डिजाइन करना है क्लाउड का, आपको सिक्योरिटी आर्किटेक्चर डिजाइन करना है, आपको स्टैंडर्डाइजेशन एंड कंसिस्टेंसी चाहिए, आपको रिस्क मैनेज करना है कि कहाँ कहाँ रिस्क हो सकता है जिसको हमने रिड्यूस करना है, आपको स्टेक होल्डर्स को कम्युनिकेट करना है। ऑल दीज मैनेजर्स जो आपको नजर आएंगे थ्रू आउट दिस एक्सरसाइज, दे आर स्टेक होल्डर्स। इनसे ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे। डेवऑप्स का एक स्टेक होल्डर है, दिस इज डेवऑप्स स्टेक होल्डर, सिसऑप्स का एक स्टेक होल्डर है, AI का एक स्टेक होल्डर है, ब्लॉकचेन का एक स्टेक होल्डर है। वी हैव many स्टेक होल्डर्स। हु आर द स्टेक होल्डर्स? You are the stakeholders. आप लोग हैं stakeholders. क्यों? आप लोग जो ट्रैक पढ़ रहे हैं, आपका stakeholder है। You will say, okay, मैं deployment cloud cyber security करूँ. So you are the cloud stakeholder. तो cloud में whatever is happening in the cloud, you will know, and you will be informed. ताकि आपको पता हो. So what is DevOps doing? They will let you know. But if you're doing DevOps and cloud दोनों, then you will see both the perspective. उसका दोनों का काम देखेंगे. And that is why I tell everyone कि if someone asks me कि यार कौन सा जो है ना ट्रैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, so that I can secure the job, मैं 3 to 6 months में फौरन जॉब पकड़ लूँ, जाके बैठ जाऊँ, and no one can shake me, मुझे कोई हिला नहीं सके वहां से। तो उसको डिप्लोमेंट क्लाउड साइबर सिक्योरिटी के साथ साथ DevOps, SysOps, AI मिला के पढ़ना चाहिए। ये तीन, if you do this, you will understand the whole perspective. And then slowly and gradually you can go in and you can do other things. और फिर आप आहिस्ते आहिस्ते जाके सारे काम कर सकते हैं। अगर आप ब्लॉकचेन डाल देते हैं, you will know the blockchain perspective. अगर आप offensive security डाल देते हैं, 5 चीजें हो गई, then you will know all the perspectives. There are 19 perspectives. This is what CIO is consist of. मैं जो CIO हूँ ना, over 23 years, this is what I've been doing. I've been running the whole organizations. There's a data science, it's just a small portion. MLOps, AI, DevOps, SysOps, ठीक है? It grows like this. See, so ये सारी चीजें, that's how you become the CIO, because आपको पूरी organization का perspective पता होता है, business development perspective, marketing operations perspective, ठीक है ना? QA ops perspective, quality assurance perspective, regulatory compliance perspective, risk management का perspective. We are not covering some of these perspectives here, but you will know. हम आपको बता देंगे. So ताकि जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाएं ये काम करने के लिए, you will find 19 different perspectives. Some of the organization में 19 मिलेंगे, some of the organization 10 मिलेंगे, because they consolidate, वो मिला देते हैं उसको. But that is how things are done. इस तरह से काम organizations में होता है. So यहाँ अगर आपने ये काम सीख लिया, wherever you go, you can talk. Interview के अंदर, they're not going to ask you, explain to me how to write a bash script. You already know that. They will give you a test, you can ace it. वो आपको टेस्ट देंगे, आप कर सकते हो, ठीक है ना? But if they ask you, यार मुझे Kubernetes का आर्किटेक्चर बनाना,
So if you just tell them कि यार मैं Kubernetes का आर्किटेक्चर ऐसे बनाऊंगा कि मैं EKS पे जाऊंगा और उसको चीजों को सेलेक्ट कर लूंगा और मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, that is the wrong answer. आप बोलोगे उसको the first thing I need to do is that I have done, जो मैंने अभी अपनी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में किया है, that I have done in my past organization, मैं जाके perspective देखूंगा. What are the business requirements? What are the operational requirements? What are the data requirements? What are the application requirements? ठीक है ना? What are the regulatory requirements? What are the risk management requirements? These are different requirements. मैं सबको gather करूँ. What are the financial requirements? You know, what can we afford? Spot instance, on-demand instance, you know, by the capacity instance. What are we doing? Does it has to be hybrid? Azure, AWS. अगर ये आंसर दिया ना, सिर्फ ये आंसर दिया, you will be selected for work. तुम्हारी job हो जाएगी. And that's what we are teaching. We are teaching you how to get the job. We're teaching you the job description from day one. So ये पूरा जो project है, it's 26 weeks का project है, 6 months. Annually, there are, you know, 52, basically, if you divide, you know, roughly 365 days over 7, you will say 52 weeks, roughly. ठीक है? 52 weeks साल में होते हैं. 6 months के ऊपर अगर आप कर दें इसको, ठीक है ना? You will get 26. Okay? So ये 26 weeks का project है. This is the third week. First week में हमने बात की high level requirements की. Second week हमने बात की solutions की. Third week में we are going now, focusing now. और हम focus करते चले जाएंगे. So by the time मैं focus करूँगा, the picture is blurry, but it will become clear, and clear. And then you will be able to see, okay, this is how work is done. This is how DevOps is done. This is how SysOps is done. This is how AI is done. This is how blockchain is done. This is how regulatory compliance is done in diploma level 3. This is how risk management is done. This is how offensive security is done. You will start learning these things. And that's what we are doing. So ये जो 6 weeks हैं, ये हम broadcast करेंगे. आपको planning देखने को मिला है. Another 3-4 weeks broadcast होंगे. And then we will ask everyone to come into the portal और वहाँ से जाके attend करें. Okay? So ये सारी चीजें हैं. This was today's area. I'm not going to take any questions today. I have to cut it short because मेरे पास सिर्फ 1 hour होता है. This is only 1 hour. I have to give the work. So the work cut out for Yusuf and the team is they have to go in, review the diagrams of TOGAF. Okay? और उसको पूरा देखना है, उसको समझना है. Review the ERP, review the wiki.js requirements. Ensure करना है उनको कि आप तमाम लोगों के पास उसका access हो, आप तमाम लोग उसको access कर सकें, documentation को पढ़ सकें, देख सकें. These are all the things you have to do. In the next class जब हम आएंगे तो इनके पास ना ये आपको project plan दिखाएंगे. This is our project plan. This is what we are doing. यहाँ पर हमने project plan, and that project plan is live. It's a living, breathing document. ये आहिस्ता आहिस्ता करके वो होगा. ठीक है ना? इसमें कुछ चीजें short हो जाएंगी, कुछ चीजें long हो जाएंगी, कुछ resources काम कर रहे होंगे, they will go out, new resources will come in, human resources. Financially हम देख रहे होंगे कितना खर्चा हो रहा है, how much are we spending on the cloud. You will be able to see everything. From the code से लेकर, design से लेकर, architect से लेकर, implementation से लेकर, compliance से लेकर, you will be able to see everything. Right? But the first 6 weeks जो है ना, ये आपकी interview preparation. उसके बाद then we'll talk, यार VPC करना है. We have to do VPC. Okay, VPC is done. RDS planning. Okay, RDS planning is done. EC2 instance versus serverless architecture. What should we do? Okay, as per the organization financial constraints, we will deploy Kubernetes architecture. Now there are pros and cons for everything. Web layer को उस पे डाल दिया, app layer को EKS पे डाल दिया, web layer को EKS पे डाल दिया. There's a ton of things. बहुत सारी चीजों की इसमें discussions, right? So ये तमाम चीजों का हम करते हुए आ रहे होंगे. And then you will see at the end when we are done and you're sitting for an interview, आप तमाम interviews को pass कर सकते हैं. Everything is done. And that is what enables you to find a job. हमारे जो students हैं यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, they are able to secure jobs overseas, right from their home countries.
You can do that as well, right? And our upcoming university will be teaching the same things. The difference is I'll be teaching them there, and you will be seeing me live on a camera from there, right? That will be the difference. And yes, our study teams, they will be sitting with me over there as well. In the same room, we will be discussing all of these things in a conference style, right? ये सब हम कर रहे होंगे. आहिस्ता आहिस्ता आगे जाकर ये तमाम चीजें इंग्लिश में हो रही होंगी. So you better improve your English. ये तमाम चीजें इंग्लिश में होंगी. शुरू की 6 क्लासेस हैं, 7-10 क्लासेस उर्दू में है, हिंदी में है. इसके बाद हम सब चीजें इंग्लिश में डिस्कस कर रहे होंगे. Because this is important. You know, आपको लर्निंग अपॉर्चुनिटी सब चीजें वहां दी जा रही, ओके, जिसको आप जाके देख कर समझ के कर सकते. So this was today's class. Yusuf, your next task is to review the documentation given by me to you. Document everything. Make sure कि इन तमाम लोगों के लिए वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो. इन लोगों के जो सिस्टम्स हैं अगले 2 वीक्स में रेडी हो. ERP में कैसे लॉग इन करना है, wiki.js में कहाँ जाना है, what they can see, what they cannot see, all of these things. They need to be documented. और जो सारे roles हैं यूसुफ, you have to document all the rules, all the roles and the responsibilities of each and every manager and director over there. Okay, who's responsible for what? ठीक है ना? I'm only talking about जो directors or managers हैं. उनके नीचे कौन लोग काम कर रहे हैं? That's not my job. My job is to ensure कि जो team जिसको मैंने काम दिया है, are they delivering or not? So that is my core focus. Okay. So in next Thursday, we will meet again and we'll go through all of these things. But in the next level, we'll be discussing different things. We'll be showing you the diagrams, ERP, project management, wiki.js for documentation. There's a lot of things. वहाँ पर you will be given the opportunity to work with the team. आप वहाँ team के साथ काम कर सकते हैं, document कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं. Okay. So jazakallah khair for your time. And on Saturday, I will be live. वहाँ पर मैं Q&A live के लिए बैठता हूँ. You can ask questions that you want to do. But today's session is done. And there's a lot of work, Yusuf, जो तुम्हें दिया गया है, Shamsi, Shamsur Rahman, and all these people जिनको काम दिया गया है, you have to go in and you have to basically start planning it out, start crafting it out, start designing things out right now, because things will get complicated as we move forward. Okay? Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullah.